Afternoon, everyone. I'm Dr. Chika Roy, and welcome to my YouTube channel. आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, दिस इज ऑल अबाउट योर गॉल ब्लैडर. द डिजीज विच इज मोस्ट कॉमनली वी फाइंड इज गॉल ब्लैडर स्टोन. ये गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, क्यों ये होता है, और क्या आप हर समय गॉल ब्लैडर का सर्जरी कराना ज़रूरी है, और अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो कितना कौन कौन से प्रॉब्लम उसके बाद में हमें देखने को मिलते हैं. मेरा टॉपिक है इसको लेके. बिफोर गोइंग टू द गॉल ब्लैडर सर्जरी यू नीड टू डिसाइड. आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे सर्जरी कितनी ज़रूरत है और कब मैं इसको कंट्रोल में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. आई एम जस्ट अपना वीडियो को मैं ऑफ कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम्स होती है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन. लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज अबाउट दिस लीवर एंड दिस इज अ गॉल ब्लैडर. नाउ दिस गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड जस्ट अंडरनीथ द लीवर. इट इज अ वेरी स्मॉल सैक. एक बहुत छोटी सी सैक होती है जो कि जस्ट लीवर के नीचे हमें देखने को मिलती है. हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है. इसका मेन काम है स्टोरेज. ओके, दैट इज स्टोरेज ऑफ द बाइल, विच इज एन कंप्लीटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सिर्फ बाइल को स्टोरेज के छोड़ के भी गॉल ब्लैडर के बाइल एसिड्स के कई ज्यादा उसके फंक्शंस हैं. ठीक है. एंड वी विल ट्राई टू रेगुलेट व्हाट आर द फंक्शंस आल्सो. ठीक है. लेट्स सी. यहाँ पर जो बाइल जो रहता है वो तैयार होता है लीवर से. बेसिकली बाइल इट इज मेड अप फ्रॉम द लीवर. ये लीवर है, यहाँ से क्या तैयार हो रहा है, बाइल. ओके. नाउ ये बाइल क्या जाता है टूवर्ड्स टू द लीवर. फ्रॉम द लीवर इट गोज इनटू द गॉल ब्लैडर. Okay, it enters into the gallbladder. Now gallbladder acts as a bile storage also, and this storage takes place in the concentrated form. Okay, in the concentrated form. Okay, so there will be a bile acids. Okay. This bile contains high amount of the bile acid, and this bile which is storage or gets stored in the gallbladder, it is in the concentrated form. And why the bile need to be concentrated? क्यों हमें ज़रूरत है कि concentrated bile की? Because जब भी आप खाते हो, जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो, this gallbladder it's need to contract. So whatever the bile which is present in the gallbladder, okay, it goes towards the intestine, and this is in pancreas. यहाँ से भी कुछ enzymes वगैरह रिलीज होते हैं, and with all these things which help in the breakdown of the fat, which help in the breakdowns of these fat, especially the dietary fat A, D, E, K, K1, K2, and very important that is ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेटेड बाइल है वो जो गॉल ब्लैडर है, एक तो वो स्टोर करता है, दूसरा वहां पर जो स्टोरेज जो होती है बाइल वो कंसंट्रेटेड बाइल की होती है कि जब भी हम खाते हैं, स्पेशली जो फैटी फूड्स अगर हम लोग जब ले रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बाइल एसिड की जरूरत होती है. तो एक तो है जो बाइल एसिड, इट हेल्प इन टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैट. इट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन. पैनक्रियास से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं विच आल्सो हेल्प इन टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट फर्दर. ठीक है. नाउ सपोज आपने ये गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, सर्जरी से आपने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा. ये जो बाइल जो तैयार हो रही थी लीवर में और स्टोर हो रही थी गॉल ब्लैडर में, वो अब स्टोर नहीं होगी और डायरेक्टली चली जाएगी इंटेस्टाइन में. ठीक है. मैंने कहा था कंसेंट्रेटेड बाइल का काम होता है विटामिन, जितने सारे फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्सॉर्ब करना, इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी अब्सॉर्ब करना इन द इंटेस्टाइन. बट अभी क्या हुआ, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है नहीं. ये जितने सारे विटामिन हैं ये सही से एब्जॉर्ब, ये जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. एंड नाउ द पेशेंट ही सफर फ्रॉम द मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. ओके. आइदर ही विल सफर फ्रॉम द डायरिया, दैट इज योर लूज स्टूल, और देयर इज सम ब्लॉटिंग. हर समय उसको लगेगा पेट भरा भरा, या ऑलवेज देयर इज अ डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है. और या तो बाइल एसिड्स अगर कम होते हैं
तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और अगर बहुत ज़्यादा अगर डायरेक्टली बाइल गिर रहा है इंटेस्टाइन में, या लीवर बहुत तैयार कर रहा है एंड दिस डायरेक्टली गोज इनटू द इंटेस्टाइन, देन द पेशेंट विल सफर फ्रॉम डायरिया। ओके, सो एक काम क्या हो गया, स्टोरेज को छोड़ के भी बाइल को कंसंट्रेट करना। ठीक है, नाउ अभी दूसरा काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स दी बाइल रिलीज है। आप कितना खाते हो उस हिसाब से ही गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने कंसंट्रेटेड बाइल को रिलीज करता है। सो रेगुलेट्स दी बाइल रिलीज है। ओके, नाउ the bile acids which is stored in the gallbladder, it helps to regulate the excess of the cholesterol। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो ये कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा दिस इट हेल्प्स टू कंट्रोल हंगर ऑल्सो। तो इट बेसिकली इज वन ऑफ द लाइक, अगर डायबिटीज है या अगर पेशेंट को अगर डायबिटीज की संभावना को कहीं हद तक ये कम कर देती है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कंट्रोल द हंगर। ओके, एंड ऑल्सो दे गुड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, प्लस ये also they help in the release of some thyroid hormones. Okay, so trigger the thyroid hormones, so blood. Now this bile also influence the thyroid gland to release the to trigger the thyroid hormones। ओके, सो हमें इतना समझ में आ गया, सिर्फ स्टोरेज को छोड़ के भी बाइल्स के कहीं ज्यादा, गॉल ब्लैडर बाइल के कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शंस है। ठीक है, नाउ गॉल स्टोन जो फॉर्म होता क्यों है, व्हाई द गॉल स्टोन्स आर फॉर्म्ड, इसका जो मेन कारण है, सपोज दिस इज योर, यहाँ पर अगर स्टोन जो फॉर्म होता है, इसका मेन कारण है दैट इज वन, देयर इज एन increase of this cholesterol, and more than the increase of this cholesterol there is a decrease of the bile acids है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना है या तो बाइल एसिड को बढ़ाना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इंक्रीज योर बाइल एसिड। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो भी कोलेस्ट्रॉल और गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म होते हैं। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल and there is a too much decrease in the bile acid। Okay, so now what happened, now what are the causative factor for the gallbladder stone, क्यों होता है gallbladder stone। सो ये तो आपने पैथोलॉजी समझ लिया कि हाँ, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है एंड द बाइल एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है। बट बाइल एसिड किस किस कारणों से कम होता है, नंबर वन, इफ देयर इज टू मच इस्ट्रोजन। ठीक है, अगर कोई भी फीमेल, if she is taking estrogen, okay, for example, or she is taking of too much oral contraceptive pills, so what this do, this estrogen, it inhibits the production of the bile acid so it decreases the production of the bile salts, the bile salt, and thus help in the formation of this gallstone। okay, now suppose अगर कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में है, so if there is an high amount of the carbohydrate diet, that means high amount of the sugar, especially the refined diet, and if there is an increase of the sugar, there is a release of this insulin level in the, okay, so there is an increase in the insulin level, and as a result, after some time, the body has become insulin resistance। So if there is an insulin resistance, then body produce more and more insulin. Body produce more and more insulin. So if there is a more and more insulin, so there is a more and more hunger. So too much frequent eating। This is one of the factor also which resulting in the gallbladder stone। So most of the देखोगे the patient who is diabetic, they either suffer from the gallbladder stone, or the person who like remove their gallbladder, in the future they likely to be suffer from the diabetes।
Okay, so these are the some of the factors. The most common जैसे कि एस्ट्रोजन आपने ले लिया, ओके, विथ लाइक इन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, और या तो आप बहुत ज़्यादा मिल्क डाइट पे हो, ओके, फॉर एग्जांपल पनीर, चीज़, ओके, बिकॉज दीज आर द एंडोक्राइन डिसरप्टर्स. So milk also causes the same thing. That is a dietary like milk. That is your milk, cheese, okay, any type of the milk and the milk product also they disrupt this endocrine, and basically they increase the estrogen level in the body, which by default decreases the bile acid and resulting in the gallbladder stone. Okay, so these are the positive factors. Now, what are the things from which you will suffer from the gallbladder removal? Now, suppose आपने gallbladder remove कर लिया, ठीक है? So there is a syndrome. Most of the doctor आपको बोलेंगे नहीं नहीं gallbladder remove करने से कुछ नहीं होगा, you will be all right. But there is a syndrome called as a post polycystic syndrome. Okay, that is post polycystic syndrome. Okay, so most of the sees that 40% of the time the patient after the gallbladder removal they suffer from the gases, bloating, nausea, constipation, and the diarrhea. I told you that is if this too much bile acid directly comes into the intestine without concentrated form, then it resulting in the diarrhea. Okay, the also if there is an anxiety and depression is there, the GB removed. If the gallbladder is removed, there might be they suffer from the anxiety or this depression, and also it increase the risk of the liver cancer by 60%. Okay, so these are the things. So before going into the like cholecystectomy or the gallbladder surgery removal, you first need what are the consequences of this. It doesn't mean that everybody they suffer from this type of the same problem, but yes, 40 to 50% of the cases we have seen or it is written that these are like the patients suffer from this type of the gases and the bloating. So what you should do, you should reduce the intake of the fatty acids because now you do not have that bile acids to digest those fat. Okay, and so what are the diet so that we can prevent the formation of the gallstone, and what are the diet if the gallstone has already formed, what diet we should follow. Okay, so number one is hmm, so number one, you should take a high amount of the good fat. Okay, high amount of the good fat. There should be a low carbohydrate, and there is an increased amount of intake of these vegetables. Okay, protein should be modified. Okay, and means sorry, it's protein should be in the moderate amount. So moderate amount of this protein, and there will be a dairy product should be no dairy product, that is milk and the milk product, and also the refined oil. Okay, so you should cut down your refined oil, you should cut down your dairy products also. Okay, any type of the cold pressed oil is good. Seed oil sometimes increases the risk for the gallbladder stone, so it is better, such as an olive oil is a good option to increase the bile acid in the body because we need to increase the bile acid. Okay, so if we increase the bile acids, then the cholesterol is like if we increase the bile acid, okay, the cholesterol slowly decreases and the ratio will get maintained. And in this way, we somehow prevent the help in the formation of the gall
stones. Okay, so there will be a high fat, a good amount of the fat, the low carb diet, high amount of the veggies, and moderate amount of the proteins. There will be no refined oils and the no milk and the milk product. Okay, and the one thing I just want to mention that whenever you have a gallstones, you will find a pain in the just in the lower rib cage, especially in the right side of the lower rib cage. Okay, so there will be a right side pain, okay, or tenderness in the uh, pain under the rib cage. Okay, so there will be right-sided pain, especially in this hypochondriac region, or there is a pain under the rib cage. Along with this, there is a bloating, there is a tenderness if you touch the liver part. Okay, so these are the some of the symptoms. Now, what just to recapitulate, what is this? A gallbladder sac, a small sac which is present just beneath the liver, and the bile which is present in the gallbladder, it is in the concentrated form. कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है और यही कंसंट्रेशन फॉर्म जो है यही हेल्प करता है जितने सारे फैटी एसिड्स हैं, जितने सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, इवन द ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए इन द इंटेस्टाइन। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है देन ये जो प्रोसेस है, ये जो दैट इज एडीईके का एब्जॉर्प्शन, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन और द फैटी मिल्स, इनका एब्जॉर्प्शन ये नहीं हो पाएगा एंड द पेशेंट में कंप्लेन फ्रॉम द डायरिया। ओके, so these are the some of the things. So I told you better बिफोर, ताकि पहले से ही किस तरह से हम आपके अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने गॉल ब्लैडर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म भी हो जाता है एंड इफ इट इज एसिम्टोमेटिक, आप गए हो टेस्ट करवाने के लिए किस चीज़ के लिए एंड वो एक्सीडेंटली निकल आया है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, देयर विल बी नो पेन और नथिंग, सो इट इज एन एसिम्टोमेटिक। So in that case, you can try. You can try this method, that is a minimum amount of the carbohydrate, no dietary no dairy products such as milk and the milk products, and high amount of the veggies and a good amount of the fat should be taken. Okay, so this is all about, and you can take some remedies also such as in calming the cardus marinus. These are some of the remedies which help to support the liver. Okay, so they increase the bile production also. One is hydrostress and other is cardus marinus. Okay, so I'm not saying that this medicines will help you to remove the gallbladder stone. This will support the gallbladder to increase the bile secretion. Okay. So this is all about your gallbladder stone. अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना पड़े तो you can just directly ask me in the chat box. Okay. So thank you everyone.